all breathe, either you or any kind of animal. Have you ever tried to thought कि यार सांस तो सब ले रहे हैं बट ले कैसे रहे हैं और आप एक्सहेल कैसे कर रहे हैं? सो आज आप इस वीडियो में, आज आप इस लेक्चर में बेसिकली यही समझने वाले हैं. नमस्कार, welcome once again at your on platform, that is CPJ Academy. My name is Shishta Sharma, and in today's lecture we will going to study about the mechanism of the breathing. So let's start this thing. Okay, how this is happening? You are saying that breathing is आप सांस ले रहे हैं, that is inhaling. आप सांस छोड़ रहे हैं, that means you are exhaling that alveolar CO2 outside from your body. Okay, but how this is happening? This emo is very sad because that emo don't know, but you are not like a emo. Okay, आप ये कंटिन्यू रखिए लेक्चर सुनना, you will definitely come to know कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है. ठीक है, इनहेल कैसे कर रहे हो आप और एक्सहेल कैसे कर रहे हो. सी, ये जो इनहेलिंग है या एक्सहेलिंग है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट. सी, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ओके, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, एज यू नो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है दैट इज 760 मिलीमीटर्स मर्करी, इतना होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप इनहेल कर रहे हो दैट मीन्स आप एटमॉस्फेयर से एयर को लंग्स के अंदर लेके जा रहे हो ड्यूरिंग इनहेलिंग. ओके, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो दैट मीन्स आप लंग्स से एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर रहे हो. दोनों ही केस में क्या हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बिटवीन दी lungs and atmosphere. Now what is that pressure gradient? See, that pressure gradient means it is either negative or it is either positive. Okay, if you remember मैंने बताया था आपको lungs के लिए एक टर्म यूज होती है that is pulmonary. Okay, and if I am talking about the body then it is intrapulmonary. Okay, so that is intrapulmonary pressure. And let's say another thing is your atmospheric pressure. क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस की वजह से, इन दोनों के डिफरेंट प्रेशर की वजह से ही इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होगी. बट व्हाट काइंड ऑफ दैट, लेट्स अंडरस्टूड दैट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, if the intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, let's say if the atmospheric pressure is 760, okay, and the intrapulmonary, let's say it's 759, okay, that means it is less than the atmospheric pressure, then it, in that sense, it will be termed as negative pressure. और तभी आपकी इनहेलिंग होगी, तभी आप सांस अंदर लेते हो. ओके, and what about the exhaling? In case of exhaling, there will be a positive pressure. Okay, positive pressure means if the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. Let's say if it is let's say it's just a minute, let's say it's 760 or it's 765 or 762, something like that. Okay, so that means in that time there will be exhaling or the positive pressure. Okay, that's why आप inhale करते हो या फिर exhale करते हो, just because of these two pressures. Either it will be negative or positive. Positive के केस में आप exhale करते हो और negative के केस में आप inhale करते हो या inspiration करते हो. And what's that negative means? Negative means the pressure within the lung is less as compared to atmospheric pressure. And vice versa for the exhaling one. Now there must be a question in your mind. यार ये pressure gradient की वजह से exhaling inhaling हुई, that's okay, समझ में आ गया. But ये pressure gradient develop कौन कर रहा है?
ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ मसल्स इन्वॉल्व होंगी, कोई ना कोई मसल्स होंगी, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम नाउ. सी दैट मसल्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दैट प्रेशर ग्रेडियंट. सी एक तो आपको पता है वो रिब्स होते हैं, रिब केज बोल सकते हैं, जिसमें आपका सनम और सब कुछ आ जाएगा, ठीक है. अब रिब्स खुद से तो मूव करेंगे नहीं, रिब्स खुद से तो मूव नहीं करेंगी. तो बेटा जो रिब्स के अंदर बाहर जो भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स. intercostal muscles that will gonna help in developing that pressure gradient. तभी inhaling और exhaling possible होगी. Okay. Then second thing and very important thing, diaphragm. अगर ये नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं होगा. We all mammals are having that diaphragm. There is no exception. कोई exception नहीं, सबके पास है diaphragm. Okay. एंड डायफ्राम की जो नेचुरल शेप है जिसमें ये ओरिजिनली एक्सेलिंग के टाइम पे रहता है, दैट इज डोम शेप्ड. Okay, that's what you have to remember. We will gonna discuss that thing. So these two muscles are involved there. Intercostal muscles are there, that can be external or the internal one, and there is diaphragm. See, now there are certain points that you have to remember if you want to learn that mechanism of breathing. See, here we are talking about the air. That means air कैसे move करती है? By the process of the diffusion. Okay, that's what you have to remember. Diffusion का मतलब from high to low temperature, or sorry, from side. You can just remember that high to low side child. Okay. Then you have to remember that rule, which is a fixed rule of the physics, which cannot be changed. That pressure is inversely proportional to the volume. That means if the volume is high, that means pressure will be low. Or if the pressure is high, so volume will be low. Okay. And now just observe, or just just make a picture in your mind. If you want to have something, so what you have to do, you have to increase the volume so that you can have something. So in that same case, if you want to inspire, if you want to inspiration, or if you want to inhale the air, that means the volume inside your body must be high. Okay. If there is volume high, that means pressure will be low. Okay. And pressure will be low, that means it's a kind of negative pressure. Okay. Negative pressure means inhaling. And if you want to exhale, if you want to give something to one, like let's say you have 10 rupees and I said, hey, give 8 rupees to someone, that means volume of the rupee that you are having right now will be decreased. That means volume will decrease. And once the volume will decrease, that means pressure will increase. And if the pressure will increase, that's the kind of positive pressure. Pressure of atmosphere. क्योंकि आपने बाहर दे दी है ना, एटमॉस्फेयर में दे दी तो बाहर बढ़ गया अमाउंट. आपकी बॉडी में प्रेशर जो था कम हो गया, वॉल्यूम जो था वो कम हो गया, बाहर प्रेशर बढ़ गया. That means it's a kind of positive pressure. That means intrapulmonary pressure is high right now than the atmospheric pressure, and it will be termed as exhaling. Okay, let's now just discuss this exhaling and inhaling in a very detailed manner. See, let's talk about now inspiration. जब आप सांस ले रहे हैं, let's just have a look there. जब आपने एयर इनहेल करी, just remember that pressure gradient कौन help कर रहा था? Muscles, diaphragm and ribs were there, but ribs can't contract themselves. There are certain muscles. Okay, so diaphragm contract. If the diaphragm contract, what will happen? It will increase the volume. Where it will increase the volume? Anterior posterior axis. Okay. And if the external intercostal muscles, okay, the muscles that are present just out or inside of the ribs, basically, that will also contract. Okay. And once they contract, so what you have to remember, क्या क्या था वहां पर? Ribs और sternum थे. You have to remember that short trick, that is unfortunately, okay, UFO. U for upward, F for forward, and O for outward. Okay, outward, forward, and upward. So ribs and sternum will lift up. Okay, they will get forward and outward. What will happen then? There will also volume increase, but now the volume will increase in dorsoventral side.
Firstly, by the contraction of the diaphragm, the volume will increase in the vertical volume side, that means in anterior, posterior. अब देखो आपका डायफ्राम का भी वॉल्यूम बढ़ गया और आपके कहाँ का जो रिब्स के साइड का था, ठीक है, डोर्सोवेंट्रल साइड पर, वहां भी वॉल्यूम बढ़ गया. एंड रिमेंबर, वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मीन्स दैट, रिमेंबर दैट लो, अगर वॉल्यूम बढ़ गया दैट मीन्स प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर विल रिलीज, प्रेशर डिक्रीज हो गया. एंड इफ द प्रेशर विल डिक्रीज देन देयर विल बी अ नेगेटिव काइंड ऑफ प्रेशर, ऑब्वियसली, तभी आप इनहेल करते हो. ओके, सो thoracic volume increases, thoracic pressure decreases. ओके, लंग्स विल एक्सपेंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम, अल्टीमेटली आपके लंग का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लंग का, क्योंकि एरिया एक्सपेंड हो गया, ठीक है, एल्वियोलाई वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है. देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई आपकी जो एयर है दैट विल गोना मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स बिकॉज ऑफ डेवलपिंग ऑफ दैट नेगेटिव प्रेशर. You can clearly understood by that picture. See, air inhale hui, what will happen, rib cage expand हो जाएगा as rib muscles contract, ठीक है, rib muscles that means that was intercostal muscles as I just told you, ठीक है, तो वो contract हो गई. diaphragm जो inhalation के टाइम पे contract करता है and will move down. This is how inhaling is happening here. Okay, see, in case of expiration, the reverse condition, जैसे उसमें रिब्स के साथ क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली हुआ था, है ना, यूफो हुआ था बेसिकली. इसमें क्या होगा, एक्सपिरेशन के टाइम पे अपवर्ड का हो जाएगा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड का हो जाएगा बैकवर्ड, एंड आउटवर्ड का हो जाएगा इनवर्ड. ठीक है, दबई, दुबई नहीं, इट्स दबई, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दैट. सो एक्सपिरेशन में इसका जस्ट अबव होगा, उल्टा हो जाएगा. क्लियर. अब इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगी, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, रिलैक्स होंगे वो. थॉरिक्स रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, थोरेकिक वॉल्यूम विल डिक्रीज. सी, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो अल्टीमेटली पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा. वॉल्यूम कम हो रहा है दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि प्रेशर जो है वो इनवर्सली होता है वॉल्यूम के. क्लियर. if the pressure is increasing that means it's a kind of positive pressure. Okay, that's why यहाँ पर exhaling होगी. Clear. And in last, air will moves out. Okay, I think you all must have saw Ramdev's video where he is doing Kapal Bharti. Okay, so Kapal Bharti में actual में पेट कम कैसे हो जाता है, if you know do that thing, it is because of the forceful expiration. Okay, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में बेटा कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है. अगर आप नॉर्मल रेस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीदिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी एक्सटर्नल कोस्टल मसल से काम चल जाएगा आपका, ठीक है, जो रिब्स के प्रेजेंट है. बट अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तब एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. ओके, सो एयर विल डेफिनेटली मूव्स ऑन इन केस ऑफ एक्सपिरेशन. सो दिस इज how your breathing is working. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please subscribe this channel and also like this channel. Thank you.